जब हम किसी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन से करंट होती है एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन light of suitable frequency incident on the surface, right? Emission of electron emission. For electron emission some energy is required, कुछ energy चाहिए होती है and that energy required, minimum energy required, right? That is called work function. Work function, that is minimum energy required for emission of electron. Right, that energy can be given in any form. हम किसी भी फॉर्मेट में ये एनर्जी दे सकते हैं. Like some of the methods are for the electron emission, that is one, thermionic emission. Thermionic emission is what we supply the heat and electron get energy and they come out. Then field emission, we apply strong electric field, and by the electric field electron gain energy and they come out. And third one is photo emission, जो हमें पढ़ना है, photo emission, right? हो गया? सर पहला वाला हीट पोजीशन, सर पहला वाला हीट पोजीशन, थर्मियोनिक एमिशन, हीट से. हो गया? yes sir, yes. Right. Now photo emission. Photo emission में light fall on a metal surface, and if light energy is sufficient enough to take out an electron, then electron will come out of the surface. Means light energy should be minimum equal to the work function. Minimum light energy should be equal to work function. Work function के बराबर होनी चाहिए, right? So there is a threshold frequency. Threshold frequency, that is minimum frequency required मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, यानी कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए लाइट का, ओनली देन इलेक्ट्रॉन एमिशन विल टेक प्लेस, राइट? एंड दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर हम बात करें न्यू नॉट, सो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एच न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन. दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड बाय द वर्क फंक्शन. इन किसी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, ठीक है? इफ phi इज द वर्क फंक्शन देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड इज phi by h. So this is called the threshold frequency. yes sir. Then experiment. An experiment was conducted for the photo emission. एक ट्यूब ली,
इवैक्यूएटेड ट्यूब, इसमें एक क्वार्ट्ज विंडो, इस साइड एक मेटल सरफेस, लाइट यहाँ पे मेटल सरफेस पे फॉल होती है, ऐसे क्वार्ट्ज विंडो से आके मेटल सरफेस पे फॉल हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकले, दे विल मूव टूवर्ड्स दिस सरफेस एंड हियर वी कलेक्ट देम, और यहाँ पे हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, एक एमीटर कनेक्ट किया, मिली एमीटर, क्योंकि बहुत कम करंट होती है, एक टू वे स्विच लगाया so that we can change the polarity, right, from positive to negative, the variable supply voltage, और एक हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया वोल्टेज मेजर करने के लिए, राइट। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया टू मेजर द वोल्टेज, दैट हाउ मच वोल्टेज वी आर सप्लाइंग, राइट। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट वी कंडक्टेड फॉर द फोटो एमिशन। अब इस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस है, first, light intensity versus current. Light intensity with current. So we found this straight line graph, that is intensity and current. Then potential versus current. What we found, some of the current even at zero potential, and जब potential बढ़ाते हैं current बढ़ता है and then it gets saturated. If we take the potential in negative, then at particular potential the current become zero. ये potential और ये current. So this potential at which the current becomes zero is called stopping potential. The negative potential at which the current becomes zero is stopping potential, right? This graph is drawn for a certain intensity and certain frequency. For a certain intensity and certain frequency, obviously the frequency is greater than threshold frequency. When we repeated this experiment, keeping the intensity same, but frequency more than previous, then we get this kind of graph. Like the current remains same, in this case the frequency intensity is same and frequency is more. So second case the frequency is more. So the current remains same but the stopping potential increases. Now it is at a greater negative potential, current is zero. So this gives an idea कि अगर हम frequency of incident light increase करते हैं तो stopping potential increase हो जाता है. This same experiment we repeated with greater intensity but same frequency. So we find this is same frequency but greater intensity. I2 is greater than I1. So when we increase the intensity, the current increases but the stopping potential remains same. So this gives an idea that a stopping potential depends only on frequency
not on the intensity. Right? Yes, sir. Then stopping potential versus frequency. Stopping potential versus frequency. We find this graph like this. ये frequency, ये stopping potential. This is threshold frequency. Right? Up to threshold frequency क्योंकि emission ही नहीं है तो stopping की जरूरत ही नहीं है. Beyond threshold frequency जैसे जैसे हम frequency बढ़ाते हैं stopping potential बढ़ता जाता है. If we draw this graph for another metal, so we find like this. Like if we draw these graph for some metals, so what we find is parallel lines. Parallel lines. Right? If I say this is nu 1, ये A, B, C. So work function of C is greater than work function of B is greater than work function of A. क्योंकि threshold frequency सबसे कम किसके लिए? A के लिए. B के लिए उससे ज़्यादा, C के लिए उससे ज़्यादा. तो C का work function सबसे ज़्यादा है. ये lines हमेशा parallel lines होंगी. Okay? Einstein equation, equation of photoemission, that is Einstein equation. This equation is simply conservation of energy equation. This is what? Energy of emitted electron is equal to energy of incident photon minus work function. And this is maximum energy of emitted electron. यानी जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी 0 से लेके इसके बीच में होगी. So this comes out as K maximum is equal to h nu minus phi. Phi is work function. You can also write it in the form of threshold frequency, that is h nu minus h nu naught. In terms of wavelength, it can be written as hc by lambda minus hc by lambda naught, where lambda naught is threshold wavelength. Lambda naught is threshold wavelength. Right? If a stopping potential is V naught, so then this equation can be written as EV naught is equal to h nu minus h nu naught. This is in terms of stopping potential, that is in terms of maximum kinetic energy. These were the observations. ये observations थी. अब अगर हम conclude करें यानी summarize करें सब चीज़ों को, first, for emission, frequency should be greater than equal to threshold frequency. Second, current depend on intensity and independent of frequency. Third, energy of emitted electron depend on frequency
and independent of intensity. Fourth, process of photoemission is instantaneous process. Process of photoemission is instantaneous process. Physical nature of light. Particle nature of light. Light consists massless energy packets called photon. Energy of photon is equal to h nu, that is h c by lambda. Right? Yes, sir. Explanation of photoemission by particle nature. It is one photon, one electron collision. Photon pass on its energy to electron on collision. If energy is sufficient, then electron emit instantly. राइट ये क्या है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन सिस्टम है. फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा. अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के लिए सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा. दैट इज वाई द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस एंड द प्रोसेस डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. क्योंकि जितनी फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, और फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट. Right? The explanation of this point is that because अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, एंड देन इलेक्ट्रॉन इज एबल टू कम आउट. ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय दिस प्रोसेस, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ कोलिजन इज इंस्टेंटेनियस एनर्जी ट्रांसफर. अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो बाहर आ गया, यानी अगर होना होगा तो इंस्टेंटली होगा, नहीं तो नहीं होगा. राइट? सो दीज 2 पॉइंट्स आर लाइक दिस. Yes, sir. Second,
intensity of light is proportional to number of photons. Number of photons. So, greater the number of photons, more the collisions and more electron are emitted. जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, राइट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ फोटॉन सेम होंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन होगा, राइट। तो इसलिए अगर हमको करंट बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ानी, फ्रीक्वेंसी से नहीं होता, राइट। इफ आई दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इंटेंसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है, एंड करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो जाती है। सो दैट इज हाउ दिस फोटो एमिशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। Explanation of photoemission by wave theory. According to wave theory, energy is in wavefront. Energy is in wavefront that spreads over the surface, right? So according to wave theory, energy कहाँ है? wavefront में है। लाइट गिरी, वेव फ्रंट सरफेस पे स्प्रेड हो गया, जब वेव फ्रंट सरफेस पे स्प्रेड हो गया तो हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलनी शुरू हुई, ठीक है। धीरे धीरे हर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करता जाएगा, जब एनर्जी सफिशिएंट होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली द प्रोसेस कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी प्रोसेस कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस। सो what it do not explain? No explanation for instantaneous process. Right. So wave theory could not explain why the process is instantaneous. Second, according to wave theory, energy depend on intensity. Energy depend on intensity, so energy of emitted electron must depend on intensity, right? So energy of emitted electron must depend on intensity, but experimentally it do not depend on intensity. Third, no matter what the frequency is, no matter what is the frequency is,
emission should take place if intensity is sufficient. If intensity is sufficient. So according to wave theory, threshold frequency का कोई existence नहीं है. According to wave theory, threshold frequency का कोई भी existence नहीं है. Right? हो गया? Yes, sir. Right. अब अगर वो देखें जो समरी की थी उसको ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी अगर हम देखें तो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं है. क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट गिरेगी, एनर्जी स्प्रेड होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करेंगे एंड देन दे विल कम आउट और फिर वो बाहर आ जाएंगे. तो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है एनर्जी. इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा. तो कितनी भी फ्रीक्वेंसी हो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एमिशन होना चाहिए. देन energy of emitted electron frequency independent of intensity. According to wave theory, it should depend on intensity. So accordingly the wave theory failed to explain the photoemission, right? But according to wave theory failed to explain photoemission, but the photon theory or the particle theory could explain the photoemission. Now there are certain phenomena like interference, and diffraction. This can be explained by wave theory only. While photoemission and one more effect is there called as Compton effect, that can be explained only on the basis of particle theory. So accordingly we consider dual nature of light. Dual nature of light. Right, means light has dual nature. It has particle nature as well as wave nature. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. Dual nature of matter. De-Broglie hypothesis. Right. According to De-Broglie, the universe consists either matter or radiation. या तो मैटर है या रेडिएशन है. अगर रेडिएशन की डबल नेचर है, डुअल नेचर है, तो मैटर की भी डुअल नेचर होनी चाहिए. Accordingly, he said that he gave the concept of matter wave. He gave the concept of matter wave. यानी there exists a matter wave that govern the moving particle, that govern the path of moving particle, right? So wavelength of that matter wave is called De-Broglie wavelength. That lambda is equal to h by p. P is momentum of particle, momentum of particle, and h is Planck's constant. So accordingly we get lambda is equal to h by mv. In terms of energy, it can be written as
lambda is equal to h upon root 2 mk. K is kinetic energy, and in terms of a charged electron, a charged particle accelerated through the potential V, it can be written as 2mqv. Now, explanation of Bohr's postulate. By De-Broglie wavelength. Stable orbit. Energy is not emitted if there exists stationary wave. जो स्टेशनरी वेव होती है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है. तो अगर ऑर्बिट में स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाती है, सो देन देयर इज नो एनर्जी एमिशन, and as there is no energy emission, so there is क्या, अगर एनर्जी एमिशन नहीं होगा देन ऑर्बिट विल बी स्टेबल ऑर्बिट हो जाएगा. फॉर दैट देयर शुड बी इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ इन एन ऑर्बिट. Right, there should be integral number of wavelength. Like in this figure, if I calculate, then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wavelength. So the circumference of the orbit 2 pi r should be integral multiple of wavelength. Then according to De-Broglie hypothesis, that is h by mv. So this comes out as mvr is equal to nh upon 2 pi. That is De-Broglie explanation to Bohr's stable orbit. यानी सिर्फ वही ऑर्बिट स्टेबल है जिनकी सरकमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ में है. राइट? Yes, sir.